question and they must answer. Um, it is like we are going to, inshallah, one by one understand all the perspectives of the past paper. Okay. So, yes. So I think the voice is clear now. Okay. So, dear students, the first thing is that we have to particularly understand the entire pattern of the paper. Okay. So in the Islamiyat, this is one of the lengthiest paper that students attempt, and they need to particularly do the perfect practice in terms of the writing. Okay, because this is not any जिसमें हम कोई verbal यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? We are specifically referring our content with the theoretical patterns. Okay, so once you particularly start doing the theory of something, you need to understand that you are required to particularly do a lot hard work over the writing. And I have particularly seen and learned many things from the students, those who were even the brilliant one, the one who used to complain at the end of the day that, Miss, I forgot to write this section. I was unable to complete the section. So why this all happened with them? Just because they didn't do any perfect practice. Okay. So I request firstly all the students to directly understand the pattern that firstly I'm sharing with you. And then inshallah, one by one, we are going to understand the questions from the past paper directly. And what I have done over here, I have particularly made a file in which you will observe that there are contents of the P1, and regarding each of the content, we do have multiple questions from directly the Cambridge assessment. Okay. So not from the year मैंने mention नहीं किया उस पे, लेकिन वो एक random file है in order to give the knowledge to the students that what type of the questions they may expect in the paper. Okay. So the first thing is of course the past paper. Okay. Okay. So now let's come to the past paper. Now I believe the screen is showing to all of you. You can see that this is the first and the important thing, and which is said to be the initial instruction page for the students, where the students are requested to put their candidate number, to write their center number, and to particularly understand that instructions are very important. I have already particularly downloaded a 2023 paper, and even in the previous paper, more or less the one thing that was common, and that was the instruction and the overall view. Okay, there is like for hardly like nearly from back 2013 and 12, 2011 and the 12, there is no as such changes in the paper. So first thing you always need to remember that do not forget to read out the instructions. Instructions are so important, because it is going to give you the complete picture that how you can particularly read out the entire paper. And of course the time is very short. So can someone tell me that what is the actual time limit of the paper, and how much time we need to finish our paper? Yes, 1 hour 30 minutes is the actual time, but we need to understand one thing very clearly. Okay, that every student, whatever paper you are picking, you should have at least 2 to 3 minutes. Look, you will be filling you will be filling your specifically आप अपना नाम डालते हो, ठीक है, पेपर पे नाम लिखते हो, सही है, उसके बाद आप उसकी इंस्ट्रक्शंस पे जाते हो, यू आर पर्टिकुलरली गोइंग टू रीड आउट द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ द पेपर, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट the questions that you want to attempt. So it takes particularly some time, like 5 minutes. Okay, but do not take more than 5 minutes. Okay, 5 minutes is the maximum limit that I believe the students should go with. Understood? So this is how you need to divide your time. You need to set a timer. I always request all the students that whenever they start,
doing the paper, the past paper practice, they need to keep a timer along themselves. And if they don't keep the timer and they don't focus on the timer, they surely, for sure, they lose at the end of the day. Okay. So we need to avoid these errors from the very beginning. So try to avoid such errors. Make sure that you are doing a perfect writing practice along with the timer. Okay. So the important instructions is that you do not use specifically any erasing pen, any erasing liquid in the paper. So those who are not appearing in this session and those who are still practice and those who are particularly still in the process of actually practice and they are going to be appearing in the May, June, inshallah. So they need to remember this, that do not use any specifically fluids in order to make the corrections. Okay. If you have done any particular error in the paper, just remove it, just make a straight line, 2, 3 lines on it. That is it. Understood? So this is a clear request to all the students that if you are going to use the remover, maybe after some time, the part on which you have removed the content from, it particularly vanishes after some time. Okay, so this is a request to all the students. Now we are heading to the another part of the paper, and that is the complete overview and outline that what you see on the very first page. Okay, after opening the first page, now it is the second page. First thing, that question number 1 and the question number 2 is always a compulsory question that is coming in the paper. And this instruction is already mentioned on the first page, and this same instruction is already mentioned on the second page as well. Okay, the page number you can see is already on the top. This is okay. This is from the year 2017. If somebody wants to do the query with me, तो ये 2017 का पेपर है जो मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट थिंग इज दैट स्टूडेंट्स इवन डू थिंक कि उन्हें अरेबिक ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करना, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है. दे नीड टू फोकस ऑन बोथ द थिंग्स. दे नीड टू इवन ट्राई टू रिमेंबर एंड मेमोराइज सम पार्ट फ्रॉम द ट्रांसलेशन. इसका रीजन क्या है? कैन एनीवन टेल मी द रीजन that why we do stress the students to particularly learn a little bit part from the translation? इसका कोई reason तो होगा ना. जैसे for example, how many themes we are learning? How many themes of the surahs are there that we have to learn? Yes, there are 3 themes that we are learning. Okay. And according to themes, okay, there is no actually hard and fast rule. कोई नहीं है पेपर के अंदर हमारे पास कि सिर्फ वननेस ऑफ अल्लाह के पैसेजेस जो है वो आपको कैम्ब्रिज सेट करके दे दे, या फिर अल्लाह's रिलेशन विद दी क्रिएटेड वर्ल्ड के कर ले, या फिर अल्लाह's रिलेशन विद द मैसेंजर्स के कर ले. नो, देयर इज नो एज सच हार्ड एंड फास्ट थिंग. rather the point is that they can particularly अलग अलग पार्ट से हो सकते हैं. ठीक है. कभी कभार ऐसा होता है कि तीनों पैसेजेस आपके वननेस ऑफ अल्लाह से आ रहे हैं. इवन समटाइम्स तीनों पार्ट से एक एक पैसेज आ जाते हैं, और कभी कभार किसी एक थीम के 2 पार्ट होते हैं और एक थीम का एक ही पार्ट होता है. ठीक है. सो दिस इज अगेन अप टू द कैम्ब्रिज दैट हाउ दे आर डिजाइनिंग द पेपर. ये किसी के भी इस वक्त हाथ में नहीं है, या हम भी इसकी एज सच कोई परफेक्ट प्रोडिक्शन नहीं कर सकते. ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्टली द थीम्स, एंड बिकॉज द फर्स्ट पार्ट is the theme. Briefly describe the main theme in the each passage. What is the demand of the question? Thing is that in the paper we do have 2 specifically blank pages attached with the question number 1. Okay, जो question 1 है इसको जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसके साथ हमें 2 blank pages दिए जाते हैं. It is recommended that you should do both the main themes on the first page. ठीक है. And then you should be doing the importance because it is the part B. So you should be doing the importance in the second page. Understood? यानी कि हम पहले दोनों मेन थीम्स हम एक ही पेज के ऊपर कर लें, और फिर दूसरा जो पेज हमारा सेकंड पेज है, क्योंकि 2 पेजेस आंसर के गिवन होंगे, तो सेकंड पेज पे जो है हम अपना इम्पोर्टेंस ऑफ द मेन थीम को लेके चले जाएं. सही है. So this is a very important key to remember. Another important thing that we need to also maintain the sequence. कि अगर मेन थीम पहले पूछी जा रही है, सो प्लीज ट्राई टू जस्ट राइट डाउन द मेन थीम्स ऑफ द आंसर फर्स्टली, एंड व्हाट आर द वेज, हम इस पे लिखें कैसे, व्हाट आर द वेज टू पर्टिकुलरली राइट डाउन कि हम इस पे लिखें कैसे, बताएं कैसे कि भाई दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 1 and I'm going to pick for example I'm going to pick the part passage number 2. So what are the ways to write it? हम इसको लिखें कैसे? Yes, any idea that how we can write it, how we can particularly tell the reader this is how I have selected this passage, and this is how I am going to particularly tell the reader what are the ways. इसके तरीका क्या होगा?
Okay, I'm writing it over here. इसका तरीका ये होगा that you need to firstly mention the question number 1. ठीक है, जो आपने select किया है, this is the question number 1. ठीक है, then you are doing part A. Okay, and now if you have selected the number 2 translation part, you need to mention it like this. Clear? ठीक है, so this is how students need to write down कि क्या उन्होंने select किया है, और यही तरीका जो है वो आगे के भी parts के लिए हम इंशाल्लाह follow करेंगे. So this is for the part A, and once you jump to the second page, once you complete your 2 passages, ठीक है, अब आप part B कर रहे हैं, so you need to particularly mention this again that this is part B and this is the same passage number 2, ठीक है, so in order to avoid the confusion even for yourself and for the reader both. Simple as that. Okay, so this is another important thing to remember during the paper. अच्छा, another important thing कि अब हमारे पास अरेबिक और ट्रांसलेशन तो गिवन है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम फिर भी बच्चे को बताते हैं फ्रॉम द डे वन, they need to reflect upon the translation very perfectly, they need to understand each part of the translation, they need to remember the parts that are given in the translation. So any idea that why it has been suggested by all the teachers of the Cambridge to their students, इसको क्यों बोला जा रहा है? What is the reason? Yes, can anyone answer? कोई इसका मुझे जवाब दे सकता है? You can type your answers in the chat box as well. Chat box is open to everyone. Yes, my question is that when Cambridge is already setting the translation and the Arabic in the paper, then why we are adding parts of the why we request the student to learn the parts of the translation? ये हम क्यों request कर रहे हैं बच्चे से? इसका क्या reason क्या है? क्या reason नजर आ रहा है? अच्छा, okay. Anyone else who know the answer that why it is being requested by, I believe, all the teachers of the Cambridge, that why we are required to specifically. Yes, exactly. Your answer is great. That it becomes easier to understand. ठीक है कि हम actually क्या देख रहे हैं. सही है, because in I believe last year it happened with the not in our zone, in another zone. There was a student of mine, and then she complained to me that the part of the translation was either missing in the paper or it was joined with the another part. Okay, I simply forgot because she belongs to the another zone, not from the Pakistan zone. ठीक है, so हुआ क्या वहां पे कि because वो बच्ची का जो part था वो उस वक्त उसके पास clearly printed नहीं था, and it was seemed like कि वो दूसरे connection मतलब दूसरी translation के साथ connected है, and she got so confused that whether she has to attend the only the Ayatul Kursi or maybe the part of the another passage from the Allah in himself. Understood? So any mishap is possible. So please make sure that whatever you are learning as a student, if the teacher is asking you to particularly remember the words of the translation, then please do remember. Okay, अच्छा, ये words of translation एक और sense में भी बड़े important है, और वो क्यों important है? देखो, when we are doing the oneness of Allah, okay, so the oneness of Allah is not the single topic that you are learning in the Cambridge. Rather, this topic also comes in the paper number 2, where the students are writing about about the Tawheed, and such references even can be used over there. Okay, again I'm repeating my words कि आपको नहीं ये बात समझ आई, दोबारा इसको सुन लें.
कि हम क्यों ट्रांसलेशन पे फोकस करना चाह रहे हैं. द रीजन इज कि जो ट्रांसलेशन के पार्ट हैं they are also connected with the other parts of the syllabus, and this is the reason that if you start focusing on this कि अल्लाह इन हिमसेल्फ ये एक टॉपिक तो है, लेकिन इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स हमें ऑलरेडी थीमेटिक वे में भी नजर आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 2 में, सेकेंडली पेपर 2 में भी नजर आते हैं, वेयर द सेक्शन ऑफ द तौहीद वी आर डूइंग. So it becomes easier for the students to put the same reference in their answer. Okay, so please always try to remember the parts of the translation. Now, yes, who was raising his hand? Yes, among the participants, is there any query? If by chance the query is missed, then please do drop it in the chat box. ठीक है, अगर किसी की कोई query है और if he feels like that query is not being answered, please drop it in the chat box. Chat box is always open. और उसमें जो है वो clearly हम इसको monitor भी कर रहे हैं कि किसी बच्चे की कोई query जो है वो इंशाल्लाह रह नहीं जाए. सही है. अच्छा, another important thing जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि देखें, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं अरेबिक के वर्जन के कि अगर हम उसको स्पेसिफिकली अपने ट्रांसलेशन में हाईलाइट करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इसकी छोटी सी अभी एक्सप्लेनेशन भी कर देती हूँ. फॉर एग्जांपल सूरह इखलास इज द लास्ट पार्ट among the last chapters of the Holy Quran and one of the brief expression about the Tawheed. Okay, this passage contains the brief expression of the Tawheed. Okay, in this passage, the one thing that is clear again and again for the 2 times, it is the word ahad. Students, if they are going to write this word ahad in the English in their main theme, this gives a very good impression to the reader. Understood? अगर आप इस तरह के वर्डिंग्स को अरबिक में मेजर एट्रीब्यूट्स को अल्लाह ताला की if you are going to put them in your answer in the English, ठीक है, then inshallah there are chances that reader is going to impress with the content that you are providing. Okay, another important thing that if there is a complete passage given in the syllabus, then its background and little bit information related to it should be given in the main theme. For example, the passage was revealed in the Makkah to the Prophet, peace be upon him. Okay, the passage was an answer to the idolaters, those who were concerned about the ancestors of the god. Okay, and in an answer to this, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the passage, and that is the Surah Al-Ikhlas. Okay, so this is how you can always refer the background in the answer. Now, another important thing, as I mentioned, कि हमें Arabic का कुछ part अगर हम डालेंगे तो there are chances of course कि हमारे पास क्या हो सकता है, नंबर बढ़ सकते हैं. ठीक है, हमारे कंटेंट में. अच्छा, ऑलरेडी दो दो हमारी मेन थीम्स हैं, तो इसका मतलब है कि 4 नंबर दो दो करके डिवाइडेड हैं, तो बहुत लंबा कंटेंट हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. हार्डली योर कंटेंट मस्ट बी कवर्ड विद इन लाइक 10 to 12 लाइंस. ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस का एक तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि जिसकी इवन राइटिंग भी बहुत बड़ी है, दे मस्ट स्टार्ट राइटिंग ऑन एन A4 पेज. A4 पेज पे आप देख लें 10 लाइंस सिंपल एक मार्क करके इसमें देखी जा सकती हैं. वो नहीं समझ आता, यू कैन पिक अप ए रजिस्टर and then you can see that if you can fix your content between the 10 to the 12 lines. Okay, and try to finish the main theme and the importance and this specific question number 1 within 15 minutes. Keep at least 15 minutes for this. ठीक है, 15 minutes ये इतना है कि ठीक है कि इसमें हम अपना इंशाल्लाह ये वाला सेक्शन इजीली निकाल सकते हैं. ओके, सो मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफी पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं. अगर स्टिल किसी की कोई क्यूरी है, प्लीज कम विद अप, ताकि मैं इसको कम अप टू मी क्विकली, ताकि फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पे चलें और नेक्स्ट पेज पे फिर एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो डिस्कस करना है. अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बता दूं कि जब हम इम्पोर्टेंस में जाते हैं, आई हैव सीन द स्टूडेंट्स डूइंग दिस एरर that they do follow the same pattern of the main theme. हालांकि importance का ये मकसद नहीं है. Importance simply means that after learning the passage, how it affect me, ठीक है, how it is building my character, how it is helpful for me as a Muslim, and what I am learning. Okay, so importance में 3 important element अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा. क्या चीज़ याद कर लें कि इस पैसेज का मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, इस पैसेज की मेरी जिंदगी में वेयर अकॉर्डिंग टू द पैसेज आई एम स्टैंडिंग. ठीक है, मैं क्या इस पे अमल कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, क्या इसका जो पैसेज का रिजल्ट है मुझे अपनी लाइफ में नजर भी आ रहा है, नहीं आ रहा. ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, सिग्निफिकेंस में हम कोई हदीस का रेफरेंस भी दे सकते हैं. ठीक है, सिग्निफिकेंस में हदीस का रेफरेंस फॉरवर्ड जा सकता है, बिकॉज हदीस में फॉर एग्जांपल कुलू अल्लाहु इट वाज द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम टू रिसाइट दिस वर्स 3 times in the morning and 3 times in the evening. According to the Prophet peace upon him, it is equivalent to the 1/3 of the Holy Quran. This simplifies that the contents of the Tawheed are nearly 1/3 in the Holy Quran.
or it actually covering the major aspect of our life, and that is to believe in the tawheed. Just because okay, in this passage ये सूर्य क्लास में एक चीज बहुत clarity के साथ आई है, the types of all the shirk are rejected over here. Shirk in the being of the Almighty, shirk in the attributes of the Almighty, shirk in the like in reference with all the creations of the Almighty. ठीक है, so all type of the shirks are actually rejected over here. Yes, for both part A and part B, we need to write and keep our answer between 10 to 12 lines. That is it. Okay. So कुछ की एलिमेंट्स इसीलिए यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, और ये हम इस पे पहले भी हमारे पास तरह के सेशन हुए कि जिसमें हमने बहुत हद तक स्टूडेंट्स को गाइड किया है, एंड एट द एंड मोमेंट आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि हमें इस तरह की जो है प्रैक्टिस रखनी चाहिए. ठीक है. ओके, नाउ आई एम हेडिंग टू द अनदर इम्पोर्टेंट पेज वेयर आई एम शोइंग यू a lengthy question, and then I will inshallah jump over to my file, and that is the contents of the P1. ठीक है, जिसमें हमने P1 के इंशाल्लाह contents आज कवर करने अपनी क्लास में कि contents of the P1 क्या चीज है. ठीक है. So now I'm heading to the another important page, and that is the page number not actually the page number 3 4 5 6. It is the another page that I have picked, जिसमें मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सिर्फ एक चीज अंडरस्टैंड कर लें, और वो क्या चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन है दिया हुआ, द प्लेजेस ऑफ द अकाबा. This is again I'm mentioning that it is the question paper of the 2017. Okay. The pledges of the Aqaba were made in the Prophet's last year in the Makkah. Outline the reasons for these pledges and write about the details in them. So what are the parts are required for the answer? Whenever you see any question, try to always break it in the parts. Try to always see that what is demanded. Okay. Firstly, the reasons, and second, the details in them. Okay. So इसका मतलब है कि हमारे आंसर में अनलेस अब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने पढ़ा प्लेजेस ऑफ अकाबा लिखना है, किसी ने उठा के सिर्फ उसकी टर्म्स लिख दी, किसी ने उठा के, एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने पूरे आंसर को ब्रेक नहीं किया इन द डिफरेंट पार्ट्स. दिस इज द रीजन दे मेड अ वेरी लाइक बिग एरर व्हाइल कंप्लीटिंग द क्वेश्चन. ठीक है. जैसे एक क्वेश्चन आया है पेपर में, आउटलाइन द कंप्लीट इंसिडेंट, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट रिवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन हु अश्योर्ड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आफ्टरवर्ड्स. अब बच्चे ने फर्स्ट रिवोल्यूशन तक पूरा बता दिया, एंड ही डिडंट फोकस on the assurance that was given to the prophet peace upon him after the revelation, and this is how he lose the mark. ठीक है. अच्छा, कभी भी हम जब लेंदी क्वेश्चंस पे जाते हैं, इट इज प्रेफरेबल कि हम एक तो लेंदी आंसर बनाना है हमें, इट्स एन एसे लेंथ आंसर. जब भी एसे लेंथ की बात होगी तो उसका मतलब है कि हमें कम से कम भी अपने आंसर को 500 वर्ड्स तक एक्सटेंड करना है, या दूसरे अगर हम इसको तरीके से देखें तो कम से कम भी 2 pages length is required from the student, 2 pages or 2+ pages. ठीक है, 2.5 pages. ठीक है. So try to at least stretch out your answer till this length. अच्छा, हो सकता है कि कभी कभार of course it is not possible for all the answers. हो सकता है कि कोई आंसर आपका within 1.5 page में 1.7.5 page length में खत्म हो जाए. It is completely fine. But do not forget the pointers that has been asked in the question. क्या पूछा जा रहा है उसको हमेशा ब्रेक करें, देखें कि भाई what is the demand of the question, and then according to that demand we need to design our answer. Okay. So इसका अब हम शुरुआत कैसे करेंगे? For example, अब हमें आउटलाइन करना है ना रीजंस को, तो ये आउटलाइन कैसे रीजंस होंगी? फर्स्टली जो भी इवेंट आ रहे हैं, अगर वो if they are connected with the life of the prophet peace upon him, and if it is linked with the life of the caliphs, we need to always refer the timeline. Okay. For example, does anyone remember के pledges of Aqaba कब हुई हैं? When were these pledges made by the prophet peace be upon him? ये कब हुई हैं pledges? What was the year? What was the timeline? Because as I said कि ये दो सेक्शन हमारे ऐसे हैं जो कि entirely हिस्ट्री बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, तो टाइमलाइन को लिखना जरूरी है यहाँ पे. सो व्हाट इज द टाइमलाइन? टाइमलाइन क्या है हमारी? कब ये प्लेजेस ऑफ अकाबा हुई थी? Because if you are not giving a proper introduction to the answer, you are actually आप एक बहुत important element miss कर रहे हो. ठीक है. As I said कि life of the prophet peace upon him और life of the caliphs ये actually हमारे पास sort of historical topics contain कर रहे हैं. ठीक है. तो हमें ये चीज समझनी है कि जब एक historical topic आता है तो हम उसको किस तरीके से convey करें. What we can do?
yes. एनी आइडिया कि हम इसको किस तरीके से जो है वो लिखें? ओके, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज दैट, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो इसमें दो चीजें पूछी जा रही ना, आउटलाइन द रीजंस ऑफ दीस प्लेजेस, एंड एज आई सेड कि जब भी कोई हिस्टोरिक हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, और हिस्ट्री बेस्ड दो ही चीजें, ठीक है, इस वक्त इंटायर P1 एंड P2 की आउटलाइन में, एक है लाइफ ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम और एक है कैलिफेट का सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो एक्चुअली हिस्ट्री बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम कोई हिस्ट्री बेस्ड चीज उठाते हैं आंसर करने के लिए, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर एडिंग अ प्रॉपर टाइमलाइन इन द आंसर। तो इस इवेंट की टाइमलाइन क्या है, इसकी टाइमलाइन क्या हो सकती है? Rema, I missed out your answer in the chat box. If you could please resend it to me. You were writing in the correct order, but I want to see कि वो क्या था, so that other students could also see, and they must understand कि क्या है वो चीज। क्योंकि हमारे पास अभी जो मैं शीट अपनी स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह, उसमें मेरा मोटिव एक्चुअली यही है कि मैं आप लोगों को पास्ट पेपर के क्वेश्चंस दिखाऊं, और पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली उसको सिर्फ देखना नहीं है, वी नीड टू लर्न एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो जो पास्ट पेपर का मेरा क्वेश्चन आ रहा है वो डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है, व्हाट इट इज डिमांडिंग फ्रॉम मी। सो हियर आई एम नाउ शेयरिंग द अनदर स्क्रीन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन रखने का मेरा मकसद ये था कि स्टूडेंट्स जज करना सीखें, ठीक है। यस, आई गॉट द आंसर, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स जज करना सीखें कि अच्छा, हजरत हमजा का वो कंसर्न नहीं था, दैट वाज द कंसर्न ऑफ द हजरत अब्बास, द अंकल अब्बास ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स को ही मैं चाह रही हूँ कि वो जज कर लें कि जब एक क्वेश्चन दिया जा रहा है लेंदी क्वेश्चन, तो वो छोटा सा नहीं है, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन में बहुत कुछ चल रहा है, और उस लेंदी क्वेश्चन को अगर मैं पार्ट्स में कर लूँ, उसके पॉइंटर्स दिमाग में रखूं कि भाई ये डिमांड है क्वेश्चन की, it becomes easier to answer that question. Okay, so now here you go with the another important screen of the today's class, and that is the questions preparation for the P1 O levels Islamiyat, ठीक है। this is entire like जो अभी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, इसमें हमारा जो कंप्लीट मोटिव है वो ये है कि हम P1 से क्वेश्चंस जो P1 के अब तक आए, ठीक है, लास्ट नियरली 10 इयर्स के अंदर अंदर तकरीबन, उन क्वेश्चन की एक समरी है, ठीक है, उस क्वेश्चंस की, उसको देखें, और उसमें से फिर स्टूडेंट्स की जो भी क्यूरीज हैं मैं उसकी एक थॉरो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रही हूँ, एंड आई वांट यू टू आंसर विद लाइक ज्वाइन मी इन द सेशन, ठीक है। आप लोग इस पे कंट्रीब्यूट करें और मुझे बताएं कि आंसर हम किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द पार्ट फ्रॉम द अल्लाह इन हिमसेल्फ, ठीक है, आइदर इट इज कमिंग फ्रॉम देयर आर 5 पैसेजेस, अगेन ईच पैसेज का रेफरेंस बहुत जरूरी होता है याद करना। आयतल कुर्सी रेफरेंस इज द पैसेज नंबर 2 255, then there's a passage from the surah al-anam 6 101 till 103। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जितने भी वननेस ऑफ अल्लाह के पैसेजेस आ रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, ठीक है, लेकिन जब इसकी इंपॉर्टेंस पे जाते हैं स्पेसिफिकली वननेस ऑफ अल्लाह में, तो कुछ हद तक इसके एलिमेंट्स स्टूडेंट को जो वो लगता है कि ये तो मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले भी आयतल कुर्सी में भी कुछ कुछ यही लिख दिया था और बाद में भी, तो इसका हम ये भी तो देखें ना कि थीम कौन सी है, ठीक है। तो वननेस ऑफ अल्लाह जो इंपॉर्टेंस है उसमें एक चीज हमेशा आएगी पांचों पैसेज में, एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इट पर्टिकुलरली कीप्स यू अवे फ्रॉम द शिर्क, ठीक है, इट पर्टिकुलरली prevents you from the shirk। if you are firm believer, if you put your belief in Allah according to his attributes, according to his powers, according to his creation, according to his perfect being, then it saves you from all sorts of the shirk। This is one of the important element that the students need to mention in the importance, okay। उसके बाद how the attributes or how the powers are affecting your life, you can talk about it, ठीक है, वो आप अपने मुस्लिम के बारे में लिख दें। आज की लाइफ के लिए, मुस्लिम के लिए, what is the most significant element for their life practice,
वो स्टूडेंट्स को मेंशन करना है, ठीक है. एंड अगेन आई वुड रिपीट माय वर्ड्स दैट यू कैन ऐड any hadith, any important element from the life of the Prophet, peace be upon him, over here. If we come to the second section, and that is the Allah's relation with the creation, अब इसमें हमारे पास 5 अगेन पैसेजेस आ रहे हैं. अच्छा, ये वो एक वाहिद सेक्शन है अल्लाह's रिलेशन विद द क्रिएशन में, जिसमें हमारे पास 3 जो चैप्टर्स हैं वो पूरे हैं. बाकी एक सूरह अलग व्हिच इज वेरी नोन टू द स्टूडेंट्स, एंड देन वन पैसेज इज टेकन फ्रॉम द सूरह अल बकरा. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये याद रखने का है कि जो भी पैसेजेस दिए गए हैं स्पेशल स्टडी में इन द सिलेबस, वो सिर्फ यहीं तक के लिए नहीं है, नॉट इवन कन्फाइंड टू द P1. Rather, once you jump into the sorry, not confined to the question number 1, rather once you jump into the question number 2, तो वहां पे भी हमें थीम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है, नाउ आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन. choose from choose 2 from the following passages and write in detail about the various ways in which the passage describe God and how he is unique. ठीक है, दोबारा देख लें, ये स्क्रीन के आपके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. चूज 2 फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेजेस, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने 4 चॉइसेस दी हैं. पैसेज टेकन फ्रॉम द सूरह अल अनाम, पैसेज टेकन फ्रॉम द सूरह शूरा, पैसेज टेकन फ्रॉम द इखलास, एंड द पैसेजेस पैसेज एक्चुअली गिवन नहीं है. अच्छा, सबसे बड़ी चीज आप ये याद रखें कि क्वेश्चन 2 में जब थीम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमें अरेबिक ट्रांसलेशन नहीं गिवन होती. रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमें खुद पहचानना है, और बाय द थीम जो वो दे रहे हैं क्वेश्चन में, उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे that how we can define and build up the answer content. Okay, so choose 2 from the following passages and write in detail about the various ways in which the passages describe God and how he is unique. Understood? So this is the very first question that I wanted to show to the students, because multiple times the student think कि यहाँ पे भी हो सकता है अरेबिक, और वो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. अरेबिक और जो ट्रांसलेशन है वो क्वेश्चन 1 का पार्ट है, ठीक है. अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो आपके बहुत रिसेंट ईयर्स का तो नहीं, लाइक ऑलमोस्ट 12 ईयर्स बैक इस तरह का एक क्वेश्चन आया था. लेकिन ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं है कि नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कैमब्रिज से. आप बिल्कुल देखा करें कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको शेयर किए जाते हैं. In what circumstances the Surah Kausar and the Ikhlas were revealed? Discuss their theme or the message. Okay, so यहाँ पे उन्होंने 2 complete chapters की बात की. सूरह कौसर जो कि Allah's relation with the messengers में आया हुआ है, ठीक है. It is how often has a question come in the past papers in which the themes are not given to us? No, the theme is already given. ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है. थीम तो दी हुई होगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब तक बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, बच्चे ने देखा ही नहीं कि मेरा पैसेज का रेफरेंस नंबर क्या था, बच्चे ने ये जज ही नहीं किया इस चीज को, तो कैसे पॉसिबल है कि वो आंसर बना लेगा. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें फोकस करना है ट्रांसलेशन के ऊपर, कंटेंट पे, और हमें देखना है कि उस ट्रांसलेशन के कंटेंट के क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट से मेन थीम में हमने क्या पॉइंटर्स डाले, इंपॉर्टेंस में क्या पॉइंटर्स डाले, बिकॉज दिस इज हाउ द कैम्ब्रिज इज डिजाइनिंग द क्वेश्चंस. ओके, ये क्वेश्चंस दिखाने का मकसद ये है कि आप जज कर सकें और देख सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अब पार्ट बी में ये क्वेश्चन आया हुआ है दैट इन योर ओपिनियन व्हाई शुड मुस्लिम्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड्स एट्रीब्यूट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. एक पार्ट ए होता है टाइप, और एक आता है पार्ट बी टाइप. पार्ट बी टाइप की क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट बी? पार्ट बी की रिक्वायरमेंट क्या है? बिकॉज both are particularly like every question in the Islamiyat उसका पार्ट ए है और पार्ट बी है, ठीक है. तो यहाँ पे पार्ट बी की डिमांड क्या है? पार्ट बी स्पेसिफिकली इज रिलेटेड to the current world experience, ठीक है. The part B particularly demands your current life, your current way of living standard, and how Muslims are supposed to put that particular teaching, understanding, knowledge that they have given already in the part A in their lives. Okay, so part B is actually your judgment based question. इसमें judgment हो सकता है, कोई चीज एनालाइज करने के लिए दी जा सकती है, ठीक है. कंपैरिजन आ सकता है, सही है. एग्जाम्पल्स पूछी जा सकती हैं इन रेफरेंस टू द करंट वर्ल्ड, ठीक है. And Muslims are supposed to write down their own views in this section. Now, another important thing कि कम से कम भी students are requested to write at least 4 statements in the answer, and their statements should reflect the current world, ठीक है. उनकी statements का मकसद पास्ट में जाना नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेंटली जो है आई वाज टेकिंग अ मॉक असेसमेंट, और उसमें एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया बच्चों से कि हाउ उमर्स रोल
Umar was actually an influential personality, ठीक है, and how it helped the Muslims even in the today's world. सही है, Umar was an influential personality. So majority students that did the error, what they did, they start putting the same statements from the life of the Umar in their part B, and this is how they lose their marks. ठीक है, तो पार्ट ए को दोबारा लेके जाने नहीं है हमने, पार्ट ए तो उन्होंने पूछ लिया, अब क्या करना है, पार्ट बी में देखना है क्या डिमांड की जा रही है, और पार्ट बी का हम कंटेंट बिल्ड करेंगे. फॉर एग्जांपल, अब पूछा जा रहा है आपसे कि इन योर ओपिनियन व्हाई शुड मुस्लिम्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड्स एट्रीब्यूट्स, व्हाट कुड बी द आंसर. गॉड्स एट्रीब्यूट सीखना क्यों जरूरी है हमारे लिए? यस, एनी आइडिया व्हाई वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द गॉड्स एट्रीब्यूट्स? अल्लाह ताला अगर अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसके 3 वेज रखे हैं, थ्रू हिज पावर्स, थ्रू हिज क्रिएशंस एंड थ्रू हिज एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के हवाले से सवाल आया है स्टूडेंट्स के पास, दैट व्हाई वी आर पर्टिकुलरली like it is an obligatory thing upon us to understand the God's attributes. लेकिन क्यों, इसका क्या रीजन हो सकता है? और ये सब कैम्ब्रिज के क्वेश्चन है, ये मैंने इसमें कुछ भी नहीं अपनी तरफ से डाला हुआ, दे आर ऑल कैम्ब्रिज क्वेश्चंस. ठीक है, ये लास्ट मैंने बता दिया कि लास्ट नियरली 10-12 ईयर्स के पास्ट पेपर्स की ये क्वेश्चंस हैं. ये एक तरह से समरी है कि P1 में अब तक क्या क्या पूछा जा चुका है, तो ये P1 के एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो मैंने रिपीट ऑर्डर के क्वेश्चंस नहीं पिक किया, जस्ट पिक द क्वेश्चंस that were unique in the content wise and that are particularly new for the students. ठीक है, जो हो सकता है 10 साल में कभी एक दफा ही आया हो, तो मैंने एक्चुअली वो क्वेश्चंस को डालने की यहाँ पे कोशिश की है. सो यस, व्हाट इज द आंसर? अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स हम क्यों समझ रहे हैं? Okay, very good, but this is just one statement that you have just put in the chat box and I need to go with at least 4 statements. As I said कि 4 तो बनानी ही बनानी है मैंने statement, 4 नहीं बनाओगे नंबर कटने वाले हैं भाई. So 4 statements कैसे हैं हमारे पास? Yes, कोई और इसका आंसर करेगा that how, what, like why is it important for the Muslims to learn the God's attributes? अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट क्यों जानने हैं हमें? कोई ये भी कह सकता है कि भाई कुरान पढ़ के ही पता चल गया कि अल्लाह ताला की जात क्या है, लेकिन एट्रीब्यूट्स क्यों? एट्रीब्यूट से क्या पता चल रहा है? एट्रीब्यूट से हमें ये समझ आ रहा है that Allah is never comparable to any being. Allah is the supreme most. Allah is particularly is above everything, everyone, every creation, and Allah particularly is the one who deserves your utmost worship, and none other than Allah should have the authority to be worshipped. Understood? जब तक आप किसी के एट्रीब्यूट्स को नहीं जज करते, आप उसको एक सुपीरियर पोजीशन पे नहीं रख सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि भाई क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा है, ठीक है, और एक लोअर ग्रेड का है. ये हमने क्या किया, तो एक उसकी एक तरह से क्वालिटी बता दी ना कि भाई एक बहुत ही अच्छा बच्चा है और एक बहुत ही बुरा बच्चा है. जस्ट बिकॉज एक अच्छा बच्चा फोकस है स्टडीज पे, वो टाइमली मैनर में पढ़ रहा है, वो डिसिप्लिन है, हमने उसकी क्वालिटीज बता दी यहाँ पे. ठीक है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा हम उसकी बुराई भी बता रहे हैं. तो इससे क्या हुआ, पता ये बात चली कि भाई जो क्वालिटीज होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं पर्सनालिटी को, किसी की बीइंग को, and unless you know those qualities you cannot judge and talk about that being. Understood? So this is the reason the attributes are very important. Attributes particularly gives you a clear way to know your creator. It particularly teaches you how to live life, how to be particularly conscious of the Allah. For example, Allah is al-alim, Allah is al-knowledgeable. ठीक है, Allah subhanahu wa ta'ala is all seer, all hearer. ठीक है, Allah subhanahu wa ta'ala, yes, very good transit. So Allah is above all. ठीक है, so if we do not understand if in the perspective of the attributes, then we have not understood perfectly the God, the ownership of the Allah, the lordship of the Allah. और फिर हर चीज ही एक्चुअली उसी से कनेक्टेड है, आवर डीड्स भी उसी से एक्चुअली कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये अगर हमें तौहीद को अपना शेप करना है, तौहीद को अगर हमने फोकस करना है, ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से एट्रीब्यूट्स को जो है वो अपने
यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू शेप आवर कंडक्ट। ओके, सो एट्रीब्यूट्स की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारी लाइफ में, और अगर एट्रीब्यूट्स नहीं पता है तो डेफिनेटली हम अल्लाह ताला की वर्थ को कंसीडर ही नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन कैम्ब्रिज ने बिल्ड किए हैं वो वननेस ऑफ अल्लाह से ज्यादा नहीं किए। इसका एक रीजन, एक तो ये भी हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ऑलरेडी तौहीद हमारा पेपर 2 का पार्ट है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अल्लाह's रिलेशन विद द क्रिएशन, और बहुत सारे सवाल आते हैं जो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह 3 तो मैंने पिक किए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट कुछ रिपीटेड भी लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हद तक कुछ चॉइस भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ वन बाय वन ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट इज दी यूजिंग 3 passages you have studied from the syllabus, write about God relationship with the created world. Now it is up to the student, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट बी वेरी क्लियर कि कौन सा पैसेज आप पिक करने लगे हैं। ठीक है, किस पैसेज के अंदर से आप समझते हैं दैट यू कैन टॉक अबाउट लाइक इन अ ग्रेटर डिटेल, इन अ गुड डिटेल, आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल आप पे डिपेंड, इंटायरली आप पे डिपेंड कर रहा है क्या नाम है कि आप किस तरीके से इसको जो है वो बना लाइक आंसर करें। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे एक शीट एक और मैं दिखा दूं। ठीक है, बिकॉज ऑन द पोर्टल ऑफ नाफी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ट्राई टू प्रोवाइड लाइक स्टूडेंट्स को हमने आंसर कीज भी जो है वो प्रोवाइड करना जो है वो शुरू की थी लास्ट 2 years बैक। ठीक है, सो दैट स्टूडेंट्स के पास अगर कोई एज सच ठीक है स्टूडेंट्स जो कि अच्छा कंटेंट बना लेते हैं, और कुछ होते हैं कि जो अच्छा कंटेंट नहीं बना पाते। ठीक है, सो बहरहाल आंसर कीज आर ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर द रजिस्टर्ड वन। ठीक है, सो यहाँ पे एक आंसर की है जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन किया। मैं ये नहीं कह रही दैट यू शुड बी एग्री विद माय क्वेश्चन, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप मेरे ही कंटेंट से एग्री करें। ठीक है, यू कैन डिसएग्री ऑल्सो, यू कैन प्रिपेयर योर ओन कंटेंट ऑल्सो, इट इज अप टू यू। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं चाह रही हूँ बताना कि किस तरीके से वी कैन बिल्ड अप द कंटेंट। ओके, क्वेश्चन यही था जो आपको अभी मैंने बताया था कि व्हाई मुस्लिम्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड्स एट्रीब्यूट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हम ये क्यों समझे गॉड्स एट्रीब्यूट को? So as Muslims, we must know attributes of Allah because it is a source of learning His abilities and the powers. This helps in learning about His being, who is most unique, incomparable. Okay, if a person focuses on the attributes, the more closeness or could have a better relationship with the Allah. For example, if a Muslims learn the attribute of Alim, Latif, Kabir, अब कोई भी attribute है, आप कुछ भी डाल दें, आप उसको define भी कर सकते हैं। ठीक है, the person will recognize that Allah holds the authority of knowing everything, so he would be aware of doing any act, that is Almighty's consciousness. Similarly, if a person understands that God is Ghafoor, he would try to repent as much as possible. So all the attributes of Allah are helpful to get His mercy and to shape our conduct at the same time. It also builds a sense that no one could ever have the authority to have these attributes of Allah as they are matchless, and shows our inability and dependency on Him. Understood? So मैंने यहाँ पे एक छोटा कंटेंट बना के बच्चों को बताने की कोशिश की है। ये कंटेंट बहरहाल अल्नाफी के पोर्टल पे अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए बहरहाल ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है देखने के लिए कि कुछ हद तक उनको पास्ट पेपर्स की जो आंसर कीज हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी बिल्टअप मिल जाती हैं। लेकिन अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यू मस्ट गो विद माय ओपिनियन, माय आंसर, माय जजमेंट। आप जो है वो डेफिनेटली अपना कंटेंट बिल्टअप करें, बट यहाँ पे सिर्फ एक शो कर दिया गया कि किस तरीके से हम कंटेंट को बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एज आई सेड कि अल्लाह's रिलेशन विद द क्रिएटेड वर्ल्ड से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और इसके पार्ट भी बड़े मजे के आए हैं, अलग अलग भी हैं और अच्छे अच्छे भी हैं। आई थिंक के ओपन अप कर देते हैं ये स्टूडेंट्स के माइंड को, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई इस तरह का पार्ट भी आना है, प्रिपेयर हो जाओ पहले से। ठीक है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, ये पार्ट बी में आ सकता है। सही है, सो एक मैंने क्वेश्चन की टाइप रख दी थी, मोर और लेस वही क्वेश्चन की टाइप पार्ट ए में आती है। पार्ट बी क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कुरान बीइंग रिवील्ड टू ह्यूमन काइंड। तो अल्लाह's रिलेशन विद द क्रिएशन में ये किस पैसेज को एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रहा है, ये किस पैसेज पे जा रहा है ये वाला क्वेश्चन पार्ट बी का। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कुरान बीइंग रिवील्ड टू मैनकाइंड। और हो सकता है कि कोई ये कहे कि ये तो मिस थीम पे ही नहीं जा रहा, लेकिन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द पार्ट बी, थीम पे तो जा रहा है, थीम पे भी जा रहा है, पैसेज में भी जा रहा है। और इसके अलावा ये भी है कि इसमें देखें जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अल्लाह रिलेशन विद द क्रिएशन में हम जो एक पैसेज पढ़ते हैं सूरा अल अलग, ठीक है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द होली कुरान, दैट वाज एन आंसर द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज वेंडरिंग, ही वाज पर्टिकुलर
particularly looking for an answer. So the answer was was actually given through the cave Hira. Okay, that was the first time he interacted with the angel. He was disturbed by the community standard of the living. He was disturbed that why people were away from the Abraham teachings, and this is how he was guided gradually, and he was finally revealed with the first of the verses or first verses में जो उनको message दिया गया था, that was to have the knowledge, and that knowledge is actually contained in the Quran. So why the Quran has been revealed to the mankind, इसको हम कैसे आंसर में लेके जा सकते हैं? इससे मतलब इंसानों पे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इंसानों पे इसको दे दिया गया है, तो इंसान क्या करें? देयर आर मेनी इवन इन द टुडेज वर्ल्ड दोज हु आर इवन नॉट कंसर्न्ड कि कुरान को वो रिसाइट तो कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द रिवॉर्ड, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. तो भाई अगर ह्यूमैनिटी को कुरान दिया गया है एज द लास्ट बुक ऑफ द अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो इसको कोई रीजन तो होगा ना. तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मुस्लिम्स की लाइफ में? और क्योंकि हिस्ट्री एंड इम्पोर्ट्स ऑफ कुरान ये पूरा टॉपिक है जो क्वेश्चन नंबर 2 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से थीम्स बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डेफिनेटली 110% जाएगा. तो कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन नहीं रेस कर सकता कि मिस ये तो बिल्कुल एक ऊपर थीम बेस्ड क्वेश्चन पार्ट ए में दे दिया, लेकिन नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये जिस सेक्शन से हम इस वक्त पिक कर रहे हैं ये हिस्ट्री एंड इम्पोर्ट्स ऑफ कुरान का है, तो हमें वहां से आइडिया मिलता है. ठीक है, हमें इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कुरान बीइंग रिवील्ड टू मैनकाइंड. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कुरान ह्यूमैनिटी को दिया गया है, इसकी अहमियत क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस? कुरान में एज सच है क्या which about which due to which it has become a significant book for the humanity. It is not for the one generation but generation to generation coming till the day of the judgment. हर generation के लिए यही है, तो इसमें ऐसा क्या है? अच्छा, न्यू कन्वर्ट्स को आप कैसे हेल्प आउट करेगा? न्यू कन्वर्ट्स तो बेचारे अरेबिक नहीं जानते, तो वो क्या करें? और ना आज का मुसलमान बेचारा ऐसा है कि वो परफेक्शन के साथ पूरा कुरान पढ़ चुका हो. तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि इट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग गिवन फॉर द ह्यूमैनिटी. It is a complete book of guidance which talks about every human perspective, every human aspect, and it particularly made possible to build up our relation with the Creator. It enables man to understand his duties towards the God and fulfill those duties in the perfect manners as particularly taught by the Allah himself. ठीक है, it is the book that particularly contains the directives. ठीक है, it is the book that particularly shows you the straight path, and it is the book that particularly proves that yes, we are the superior creatures of the God. Okay, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर आप देखें when it was gifted to the mountains के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला कुरान में खुद ये कहते हैं that the mountain would have been crushed by the essence of the Quran. ठीक है, so this is the reason it is the biggest responsibility upon the Muslims, ठीक है, to preach it, to preserve it. ठीक है, और यही सारे messages हमें इस पैसेज अलग में भी दिखाई देते हैं, and our final actually destination is entirely dependent on the Quran. Okay, understood? हमारी फाइनल डेस्टिनेशन किस पे डिपेंड कर रही है? कुरान पे डिपेंड कर रही है, और अगर कुरान इज नॉट देयर, आवर लाइफ इवेंचुअली वुड नॉट बी अ सक्सेसफुल वन. ओके, अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है इसी सेक्शन से, दैट कुरानिक पैसेजेस जितने भी हैं, ठीक है, जो कि फ्रॉम द सिलेबस, व्हाट डू यू लर्न about the God's responsibilities to his creatures and their two duties towards them. अल्लाह ताला की क्या जिम्मेदारी एज अ गॉड, ठीक है, अल्लाह ताला गॉड है, ठीक है, तो उसने हमें बना के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया. ही हैज पर्टिकुलरली, यस, वेरी गुड, यस, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द एवरी लॉ. ठीक है, हर लॉ की एक्चुअली यही फाउंडेशन रखी गई है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड. अच्छा, अब हमारे पास कुछ कुरानिक अब जो आ रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह रिलेशन विद द क्रिएशन वर्ड का सेक्शन है, अब इसमें एक पार्ट बी का एक क्वेश्चन है जो बड़ा डिफरेंट सा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट हाउ माय टीचिंग्स फ्रॉम दीस पैसेजेस एनकरेज पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट. यानी कि अल्लाह का रिलेशन बताए गए क्रिएशन के साथ. हमने ब्लेसिंग्स भी पढ़ी हैं सूरह अल बकरा में. ठीक है, वी लर्न के फ्रॉम द पैसेज सूरह अल बकरा वर्स 21 and the 22 that Allah gave us rain, Allah gave us particularly an earth as a comfortable walking place, heaven as a shade, ठीक है, heaven as a canopy above us.
तो यहाँ पे अब हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि अल्लाह ताला ने जो इतना बड़ा हमें एनवायरनमेंट दे दिया है, तो उसके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाउ माई टीचिंग्स फ्रॉम द पैसेजेस इनकरेज पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे टेक केयर करें, व्हाट वी शुड डू. और इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ और भी पार्ट बी में है, जैसे 2021 के अक्टूबर नवंबर में भी आया हुआ है. यूजिंग पैसेजेस फ्रॉम द सिलेबस राइट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द ह्यूमन काइंड टुवर्ड्स गॉड एंड द क्रिएटर. ये पार्ट ए ऑलमोस्ट सेम आ गया. पार्ट बी इन्होंने दोबारा पूछ लिया वैसी, दैट व्हाई डू व्हाट डू मुस्लिम्स हैव टू कंसीडर व्हेन लुकिंग आफ्टर देयर एनवायरनमेंट. तो थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ रिपीट ऑर्डर में आते हैं. ठीक है, सो क्या इससे समझ आ रहा है कि हम एनवायरनमेंट के लिए क्या करें. और एनवायरनमेंट में सब चीजें आ रही हैं. आपकी अर्थ भी आ रही है, आपके इर्द गिर्द के लोग भी आ रहे हैं, आपकी कंप्लीट एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, व्हाट वी शुड डू. क्योंकि भाई हम भी दुनिया में जब भेजे गए तो हमें भी तमाम तरह एसेंशियल्स एलिमेंट दे के भेजा गया. ठीक है, वाटर वाज देयर, अर्थ वाज देयर, हेवंस वर देयर. तो अब हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, दैट व्हाट शुड वी डू. नहीं, ये पैसेज से नहीं आया क्वेश्चन. मैं बता रही हूँ कि ये थीम से क्वेश्चन आया हुआ है. अल्लाह रिलेशन विद द क्रिएशन का ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से अल्लाह हैज गिवन अस सो मेनी ब्लेसिंग्स. नाउ इन रिटर्न हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू. हमें क्या करना है, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम क्या काम करें फॉर आवर एनवायरमेंट. आई एम अगेन शोइंग द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. और ये क्वेश्चन 2-3 दफा अब तक आ चुका है हमारे पास पास्ट 10 years में. ठीक है, दैट व्हाट मुस्लिम्स, और ये 2021 का है, रिसेंट है तो मैं दिखा रही हूँ. व्हाट डू मुस्लिम्स हैव टू कंसीडर व्हेन लुकिंग आफ्टर देयर एनवायरनमेंट. मुस्लिम्स क्या कंसीडर करें व्हेन लुकिंग ओवर द एनवायरनमेंट. इन्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आता है उसके लिए हम क्या करें. यस, वेरी गुड. Yes, there are certain things which are source of learning the God's graciousness upon the humanity. ठीक है, the God's greatness is actually shown by the creation around us. If the earth was given to us, now it is our responsibility to make sure that we as a Muslims are doing and conducting the maybe the good deeds over here. We are keeping the environment clean. ठीक है, we are even taking care of the people. We are providing them the essential needs. We are prohibiting the people. Yes, very good. Stop abuse. ठीक है, stop the persecution, stop oppression over this entire planet. Try to keep it clean and make the major objective that since we have been sent as a vice children, ठीक है, हमें as a caliph बना के भेजा गया है. Now it is our responsibility to be a representative of the God and try to preach what God has commanded and try to preserve what God has sent. ठीक है, तो ये दोनों वेज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करेगा हमारा आंसर. Yes, very good. Answers are correct and answers are perfect. Okay. Acha, I'm heading to now another important section, and that is the Allah's relation with the messenger. ठीक है, ये last है इंशाल्लाह हमारा. उसके बाद बहरहाल क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हमारे पास, बट इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह लास्ट को कंडक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास जब भी मैसेंजर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली कभी कभार पार्ट ए जो होता है हमारा, जैसे कि 2011 का यहाँ पे क्वेश्चन मैंने डाल दिया है कि from Quranic passages outline the relationship between God and two of his prophet who were sent before the prophet peace upon him. अब यहाँ पे as I said earlier कि अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझते, अगर आपने मेंशन ही नहीं किया, अगर आपने देखा ही नहीं कि डिमांड क्या थी क्वेश्चन की, और यहाँ पे डिमांड बड़ी क्लियर आ रही है कि who were sent, you need to talk about those who were sent before the prophet peace be upon him. ठीक है, उनसे पहले अब जो आए अब हमने उनकी बात करनी है. तो नाउ स्टूडेंट्स के पास चॉइस है. ठीक है, they have the story of the prophet Adam, they have the story of the prophet Abraham, they have the story of the prophet Isa. चाहे तो वो किसी की भी यहाँ पे आउटलाइन कर सकते हैं. रिलेशनशिप बताइए उसमें कि अल्लाह ताला का क्या रिलेशनशिप रहा है टुवर्ड्स दिस मैसेंजर्स. ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने दिखा दिया विच केम इन द 2013
कि टेल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द सूरास इन विच दे वर रिवील्ड, सूरह इखलास एंड द सूरह कौसर। इसके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है जिसमें तमाम तर प्रॉफिट्स को भी कंबाइन कर दिया गया, टिल द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, टू व्हाट एक्सटेंट इज द कुरान इज द बेसिस ऑफ द लीगल थिंकिंग इन इस्लाम। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें अच्छी तरीके से कि सिर्फ पार्ट ए में नहीं आता, ये आप देखें पार्ट बी में भी उन्होंने शॉर्ट करके पूछ लिया है कि कुरान इज अ बेस ऑफ द इस्लामिक लीगल थिंकिंग, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज। और अब इसको हमने पार्ट बी यानी कि शॉर्ट करके देना है। यस यस यस, लेकिन कोई एज सच कंपल्जन वो नहीं है, कंपल्सरी या मैंडेटरी एलिमेंट नहीं है कि हम पार्ट बी में रेफरेंस को यूज करें। अगर आप कर रहे हैं लाइक देखो पार्ट बी में भी हम बहुत एक्सटेंड तो नहीं करते ना कंटेंट को। पार्ट बी हार्डली आपका लाइक वो भी आपका हाफ पेज तक अगर जा रहा है, ठीक है, अगर जा रहा है हाफ पेज तक, तो जाहिर सी बात है हाफ पेज में जाने का मकसद यही है कि बच्चे ने उसमें कुछ ना कुछ रेफरेंस भी ऐड कर लिया। लेकिन रेफरेंस कोई मैंडेटरी एलिमेंट पार्ट बी में नहीं कहा जाता। लेकिन अगर आप उसको पार्ट ए में डाल दें देन फॉर श्योर देयर आर चांसेस टू गेट अ हायर लेवल रिस्पांस मार्क्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ रिस्पांसेस हैं, हायर है, एवरेज है और फिर उसके अलावा फिर लोअर आ जाता है। तो अगर आपने हायर अचीवर में रहना है बिटवीन 10 to 8, ठीक है, मार्क आउट ऑफ 10, ठीक है, तो फिर उसके लिए आप रेफरेंसेस को डालें, अच्छे रेफरेंसेस को डालें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पार्ट बी का क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई डू प्रॉफिट्स गो थ्रू द डिफिकल्टीज इन देयर लाइव्स। और तकरीबन सभी प्रॉफिट्स ने डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस की है, तो क्यों, मतलब व्हाई दे वर टेस्टेड, वो टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं। दे वर द चूजन वन, दे वर द लाइक क्लोजेस्ट वन, दे वर द beloved like one of the chosen creation of the Allah subhanahu wa ta'ala, so उनको इतना टेस्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट है। और ये क्वेश्चन अगेन यहाँ पे आप ये नहीं बात बार बार बोलेंगे कि हजरत आदम को ऐसे टेस्ट किया गया, हजरत ईसा को ऐसे टेस्ट किया गया। यू नीड टू रिफ्लेक्ट अबाउट द मुस्लिम लाइफ। ये जो एरर है जो स्टूडेंट्स बार बार कर रहे होते हैं पार्ट बी में, इस एरर को हम रिमूव करें अभी से अपने दिमागों में, टू टॉक अबाउट कि उन्होंने ट्रायल से वो गुजरे, तो इसमें हमारे लिए क्या है, व्हाट इज फॉर अस, कि प्रॉफिट्स ये इतनी डिफिकल्टी से क्यों चले गए। और आज के दुनिया के मुस्लिम्स भी उन्हीं डिफिकल्टीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो प्रॉफिट्स को एक्चुअली दी गई, ठीक है। और उसका एक मकसद ये था कि हम अपने एक तो सबसे पहले अपने फेथ को फॉर्म कर सके, ठीक है। वी नीड टू रिलाई ओनली इन द गॉड, that he is the only one who is our provider, our sustainer, the cherisher, who is the provider under all means, and he is going to resolve our problems, ठीक है। इससे हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है टू शेप आवर कंडक्ट, इट इज नेसेसरी। कुरान रिपीट्स दैट with every difficulty there is a ease, ठीक है। सो इट मीन्स कि डिफिकल्टी के साथ कहीं ना कहीं ईज भी आ जाएगी, सही है। सो बहरहाल जितने भी प्रॉफिट्स थे दे वेंट थ्रू द ट्रायल्स, और वो जो ट्रायल्स उनके थे वो एक अलग ही बहरहाल लेवल के ट्रायल्स हैं। हमारे लिए भी लाइफ में बहुत सारे ट्रायल्स हैं। एवरी वन ऑफ अस, वेदर यू आर इन द एज ऑफ स्टूडेंट एज में आप खड़े, आप आगे एज में चले जाएं, ठीक है, तो एवरी वन टिल द मैन इज अलाइव, ठीक है, टिल हिज लास्ट ब्रेथ द लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। हमारा अब इसमें यहाँ पे मोटिव क्या है कि टू पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड कि जो लाइफ के ट्रायल्स हैं दे आर एक्चुअली अटैचिंग आवर सेल्फ बैक टू द अल्लाह, बैक टू द क्रिएटर अगेन एंड अगेन, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ चांस व्हेन द ब्लेसिंग्स आर गिवन टू द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, दे डू फॉरगेट अबाउट देयर लॉर्ड, ओके, दे बिकम अनग्रेटफुल टू द अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो जो ये हमारे ट्रायल्स हैं, इवन इट इज मेंशन इन द कुरान की जो ट्रायल्स हैं, they particularly when a person is afflicted with a calamity, होता क्या है, he at once rush back to the Allah subhanahu wa ta'ala, फौरन जाता है, पलटता है अल्लाह के पास। And this is what we need to remember under all critical moments and the situations, that life is a test. It is never a happy ending for everyone. It is never going to be on a consistent level. Rather, there are going to be challenges in your life. In as a believer, we need to remain firm and we need to believe in the decree of the Almighty, and we need to remain like attached with the path of the God. Okay, तो ये है कि हम पेशेंस भी नहीं लूज करें। यस, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फरवा, कि हम पेशेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करें, ठीक है। द प्रॉफिट्स नीड टू बी ऑलमोस्ट परफेक्ट एग्जांपल। और प्रॉफिट्स को, यस, वेरी गुड रहमा, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव हाइलाइटेड इन द आंसर, कि ये प्रॉफिट्स को सबसे ज्यादा ट्रायल में क्यों रखा गया। जस्ट बिकॉज अगर प्रॉफिट्स की लाइफ शेप्ड होगी तभी तो हम उनके फॉलोअर्स बनने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रही हूँ, बता रही हूँ बल्कि, ठीक है, जो कि हमारा थीम बेस्ड ही है आज की क्लास का। इससे ज्यादा डिस्कशन का यहाँ पे टाइम नहीं मिला है हमें।
अच्छा कभी कभार इस तरह भी लिखा हुआ आ जाता है कि इनमें से चूज करना है, अब्राहम, आदम एंड हजरत ईसा में से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस इन द पार्ट बी, एक्सप्लेन व्हाई गॉड सेंड्स हिज रिवलेशन थ्रू द मैसेंजर्स। अच्छा आप क्वेश्चंस पढ़ते जाएं, अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है लेट मी नो, ठीक है, ताकि मैं इसका आंसर कर सकूं। सही है, व्हाई गॉड सेंड्स हिज रिवलेशन थ्रू द मैसेंजर्स, ठीक है। सेकंड, व्हाट लेसंस मुस्लिम लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ द सूरह क्लास, जो भी स्टोरीज आई हैं पार्ट ए में, ठीक है, उसके रेफरेंस से। God sends humankind messengers from among their communities. Explain why this is significant. ठीक है, अलग करके भेजा, तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस हमें दिखती है, ठीक है। As God's representative Khalifa on earth, say how men and women can serve God, giving examples in the answer. अगर क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी हो रही है, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स से मुझे लिखें ताकि हम इसको इंशाल्लाह यहाँ पे अभी के अभी डिस्कस कर लें। जो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसमें देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन 2-3 दफा आया है पेपर में, that as a representative of the Allah, as the Khalifa, how men and women, which one? Rohab, can you add the question? और because मैं थोड़ा यहाँ पे क्विकली इसको वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अल्लाह, ठीक है। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? अल्लाह ताला ने मुझे एज अ रिप्रेजेंटेटिव अगर भेजा है तो इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना मेरी, और वो क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरी? और आपने ये रिप्रेजेंटेटिव का देखो, सबसे पहले तो ये वर्ड हमने पढ़ा कहा था, डू यू रिमेम्बर कि ये वर्ड हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये वर्ड आया है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव वाला कहाँ से आया है हमारे पास? It is the word that was given in the passage Surah Al-Baqarah. The passage was in regards to the story of the Hazrat Adam. ठीक है, the word representative was used for the firstly created being, and the representative word is actually showing you your duty as a creator of Allah. ठीक है, और उस पे आपको क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैन एंड वुमेन क्या करें, आदमी क्या करें और औरतें क्या करें, क्योंकि हिसाब किताब तो दोनों से होना है ना। they are responsible for their deeds, everyone is individually responsible। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो आंसर जो है वो हमारा बड़ा क्लियर है, ठीक है। इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर आंसर कि मैन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और औरतों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम इसको कैसे लेके जाएं, व्हाट वी कैन डू? अच्छा, आई हैव ऑलरेडी डिजाइंड अ टाइप ऑफ एन आंसर हियर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा शेयर भी कर देती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। हो सकता है कि हर बच्चा इतना एफिशिएंटली आंसर ना कर सके, सही है, तो बहरहाल यहाँ पे शेयर भी कर रही हूँ। yes, every man and woman, they both are responsible, ठीक है, as a representative of the god, ठीक है। their entire responsibility is to firstly fulfill, obey the god and convey his words to everyone, ठीक है। but everyone says they have their own position, so they need to conduct their affairs and they need to understand their authority, ठीक है। whatsoever has been given to them, they should be they should remain engaged in worshipping of the god, ठीक है। they should understand that they need to practice 5 pillars of the Islam, ठीक है। they need to be modest in their dressing, ठीक है। they need to reflect as a complete representative of the Allah subhanahu wa ta'ala। समझ आ रही है बात? यानी कि हम यहाँ पे
ये कहेंगे लाजमन कि भाई अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया हुआ है, लेकिन हम सब अपने अपने रोल्स में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, और हमारा रोल जो है वो बड़ा ही कोई क्रिस्टल क्लियर है एज अ मैन एंड अ वुमेन बोथ, ठीक है। मैन और वुमेन दोनों के लिए ही हमारा जो रोल है वो दोनों तरीकों से एक अलग अलग पर्सपेक्टिव में आ रहा है, ठीक है। सही है, समझ आ रहा है, सही है। So every woman and the woman primary responsibility is to understand his duties towards the creator, ठीक है। और उसकी जो ड्यूटीज हैं वो बहरहाल उसको एक बताएंगी, शेप करेंगी उसके कंडक्ट को। और बिसाइड्स दिस द वन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी दैट हैज बीन enjoined upon the mankind, और ये हमने वर्ड्स में पढ़ा है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स गिवन इन द कुरान, that they are actually the Muslim Ummah is the nation that has been raised for the promotion of the good, ठीक है, for the propagation of the good, and this duty is equally, the Muslims are responsible, whether men and the women, they both are responsible in this perspective। दोनों की ड्यूटीज यही हैं, ठीक है, कि वो दोनों इस चीज को समझेंगे that they need to whatsoever they are going in the life, ठीक है, they need to maintain the ways and shape their conduct and be on the righteous path and be submissive to the God। Yes, फीडिंग टू द पुअर भी आ सकता है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज आ सकती है, मैंडेटरी ड्यूटीज आ सकती हैं, लेकिन लोगों को बुराई से रोकना, दिस इज वन ऑफ द मैंडेटरी एक्शन बोथ एज अ मैन एंड द वुमन, ठीक है, ये दोनों के लिए आता है। अच्छा, अंडरगोइंग हार्डशिप्स ब्रिंग अ पर्सन क्लोजर टू गॉड, ये 2017 का क्वेश्चन है। एग्री और डिसएग्री, यस ऑफ कोर्स एग्री, इसमें डिसएग्री अगर करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एग्री का रहेगा, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें तमाम तर क्वेश्चंस अब मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये समझ आ जाए हमें कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका उनका जो मेन जो पर्सपेक्टिव है वो एक तो पार्ट ए के साथ लिंक्ड होकर आता है, ठीक है। और पार्ट ए के अलावा जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमने हर चीज को अपनी आज की करंट वर्ल्ड में रखना है, और फिर अंडरस्टैंड करना है कि हम किस तरीके से आंसर करेंगे पार्ट बी का। ट्राई टू प्रोवाइड एटलीस्ट 4 स्टेटमेंट्स इन दी आंसर, ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स को हमने करना है। नहीं 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 नहीं, हम एक पॉइंट उठाएंगे। आप एग्री करते हो, आप डिसएग्री करते हो, आपने एक पॉइंट रखना होता है, ठीक है। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि भाई आप एग्री कर रहे हैं तो 2 स्टेटमेंट्स दे दें, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि आप डिसएग्री कर रहे हैं तो 2 स्टेटमेंट्स दे दें, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, सही है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या पूछा जा रहा है, सही है। लेकिन आपने, यू नीड टू बी वेरी क्लियर, एग्री डिसएग्री करना ये आपके हाथ में है। आप एग्री करेंगे तो भी आपने रीजनिंग स्टेटमेंट देनी है, आप डिसएग्री करेंगे तो भी आपने रीजनिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी तक हमारे सेशन में ये एक सेक्शन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर करने की कोशिश कर ली आज, रिगार्डिंग द थीम्स बेस्ड क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन 1 में हमें कैसे देखते हैं, और क्वेश्चन जब 2 में जब वो आते हैं तो हमें किस तरीके से समझ आ रहा होता है। इफ देयर इज एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस, लेट मी नो। अगर किसी का कोई इसमें सवाल है तो मुझे बताइए। ठीक है, आई बिलीव क्वेश्चंस आर क्लियर, सही है, बिल्कुल क्लियर है सबको अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस इंटायर सेशन को हम इंशाल्लाह यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब जो P1 के हमारे रिमेनिंग कंटेंट्स हैं उसको भी हमने इसी तरीके से थॉरोली इंशाल्लाह कवर करना है, एंड वी नीड टू चेक एंड सी कि क्या क्वेश्चंस आए हैं P1 में, और हाउ वी कैन बिल्ड अप द आंसर, और फिर उस इंशाल्लाह फिर हम P2 के ऊपर भी इसी तरीके से बात करेंगे कि क्या आया हुआ है। मैंने कहा ना कि पार्ट बी में एज सच हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पार्ट बी में एज सच रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन अगर आप डाल रहे हो, एंटायरली अप टू यू। सूरा रेफरेंस नंबर के साथ याद करना एक हद तक जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको नंबर भी अच्छे मिले पेपर में। अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली जरूर करें इस चीज को, सही है। ऐसा नहीं है कि उसके बगैर मार्क्स ही मिलता है, ऐसा नहीं होगा, मार्क्स तो मिलेंगे डेफिनेटली आपकी कंटेंट बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन ये एक तरीके से एक तरीका है, ठीक है। रेफरेंस अपनी तरफ से लिख सकते हैं, अपनी तरफ से बेटा हम रेफरेंस कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि देखो ना, रेफरेंस अपनी तरफ से कैसे आ सकता है। हमें तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी है ना कि जो रेफरेंसेस हैं
वो हमारे आ ही एक्चुअली फ्रॉम द बुक आ रहे, फ्रॉम द बुक ऑफ अल्लाह और एंड फ्रॉम दी हदीस आ रहे, ठीक है। तो या तो वो हदीस को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर वो कुरान को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वो चीज है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है कि रेफरेंस इन दो में से ही आ रहा है, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्विकली विद इन 5 मिनट्स में कुछ की एलिमेंट्स और डिस्कस कर रही हूँ हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान के, इंशाल्लाह फिर हम इसको एंड कर देते हैं सेशन को। I hope the screen is coming to you people. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस हदीस, ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस कुरानिक वर्स, ये फॉर श्योर आप कर सकते हैं। अगर अभी कभी ऐसा होता है कि हमें रेफरेंस नहीं याद आ रहा, ठीक है, तो आप बजाय इसके कि आप प्रॉपर वर्डिंग लिख दें, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू दिस कुरानिक वर्स, अकॉर्डिंग टू दिस हदीस, सही है। इस तरीके से बहरहाल आप फॉर श्योर बता सकते हैं, इसमें कोई एज सच आई थिंक इतनी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ये तो बहरहाल किया जा सकता है, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दोबारा से आई एम गोइंग विद द शेयर्ड स्क्रीन, और शेयर्ड स्क्रीन में एक मिनट, अच्छा स्टूडेंट्स दे कैन कम अप ऑलवेज विद द क्यूरीज, ठीक है, पोर्टल के थ्रू भी डायरेक्टली की जा सकती हैं क्यूरीज, ठीक है। एंड लाइव सेशन करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो भी अपेयरिंग लेवल के हैं, इंशाल्लाह दे कुड अंडरस्टैंड द एंटायर पर्सपेक्टिव, और वो इसको समझें और देखें कि किस तरीके से हमने कंटेंट बिल्ड करना होता है, सीखें डिटेल्स को, और इंशाल्लाह इससे जो है आई होप आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड और सॉर्ट ऑफ होप हेल्प टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी इंशाल्लाह अपेयरिंग लेवल में है, चाहे वो अक्टूबर नवंबर में अपेयरिंग हो या फिर चाहे वो इंशाल्लाह मई जून में जाके अपेयर हो रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टाइम थोड़ा इसको कम है, सही है, क्योंकि सेशन ऑलमोस्ट 1 आवर एक्सटेंड हो चुका है हमारा। अच्छा, नाउ यू कैन सी, मैं सिर्फ ये दिखाना ये चाह रही हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के हमारे पास ऑलरेडी डले हुए हैं ओवर द पोर्टल, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन पिक अप दोस फाइल्स, स्टूडेंट्स कैन डू द प्रिपरेशन। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स इन द पास्ट ईयर्स जो कि पोर्टल पे डायरेक्टली आते हैं, कनेक्ट होते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट पेपर के थ्रू ही अपनी प्रैक्टिस जो है वो एंड मोमेंट की बड़ी अच्छी कर लेते हैं, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, इफ यू विश टू कनेक्ट यू मे कनेक्ट विद द पोर्टल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट ऑन द स्क्रीन के फर्स्ट रिवोल्यूशन का जैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो फर्स्ट रिवोल्यूशन का मैंने यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, ये दोनों कलेक्टिवली यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि पार्ट ए, अगर पार्ट ए यूजुअली स्ट्रेट ही पूछा जाता है, ठीक है, जैसे पूछा गया कि व्हाट आर दी इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशन एक्सपीरियंस बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हाउ ही वाज अश्योर्ड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद अब इसके आप पार्ट बी देख लें, चार मैंने पार्ट बी यहाँ पे निकाल के डाले हैं। What can Muslims today learn from the first revelation about the importance of reading and the understanding the Quran, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि the prophet peace upon him could not read or write, in what way this has been significant for Muslims? The Quran was revealed in parts over a number of years. Why was this important? What is the significance? Was it significant that Quran was revealed to someone who could not read and write? ठीक है, give reasons for your answer. So this is how students need to understand. रिविलीशन कैसे छोटा है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिविलीशन कैसे छोटा है, पहले तो मुझे ये समझाओ। देखो, मैंने यही कहा ना कि उसको पॉइंटर्स में तो डिवाइड करें ना हम कंटेंट को। पहली चीज तो ये कि हम उसमें बताएंगे, अब मैं तुम्हें इसका तरीका बता रही हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो, पहले तो हम बताएंगे बैकग्राउंड में, पहले तो हम जाएंगे कि द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम व्हेन ही टर्न टू द एज ऑफ 37 ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग इन द केव हिरा, ठीक है। इट वाज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ रबिया ही गो टू अ फर्देस्ट एरिया एंड दैट वाज द Mount Jabal Nur, and there was a cave here. Okay, the Prophet started spending his period of isolation over there. He used to meditate, think about the community, the problems,
And what particularly inspired him, it was the true dreams that he experienced for over 3 years. 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने true dreams experience किए हैं, and because of this he became fond of this seclusion. ठीक है, उनको पसंदीदा उनकी लिए फिर ये spot बन गया. ठीक है, initially he spent the few years से फिर वो weeks में आगे, months में भी आगे. Even once Hazrat Khatija came out in search of the Prophet, peace be upon him, कि क्यों जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी देर हो गई. And Prophet peace upon him, whenever he would go to the cave Hira, he would try to take all of his supplies over there. ठीक है, खाने पीने का जो सामान होता था. सही है, तो ये तो बैकग्राउंड में ही आपके इस वक्त 5-6 लाइनें चली गई. ठीक है, अब आप आ जाएंगे that once it was the in the age of his 40th year. ठीक है, it was the period of the month of the Ramadan when the first time the Prophet peace upon him interacted with the angel. The questions that he was looking for, now the answer is revealed by the God in the cave Hira, and the first verses of the Surah Alaq were revealed to him. But since it was the first interaction, अब आप पूरी उस interaction के pointers डालेंगे यहाँ पे कि जब उनके साथ interaction हुई angel की, the Prophet peace upon him was unable to answer him. Prophet was so scared. ठीक है, आप उनका experience यहाँ पे लिखेंगे. आप बताएंगे that he was so scared. He, since the formal education was not received by the Prophet peace be upon him, so he had a difficulty of reading. ठीक है, according to scholars यहाँ पे दो चीजें हैं. Maybe something was shown to him and he was unable to read, and finally the angel pressed him tightly, hugged him, squeezed him so that he could little bit get familiar with the angel. ठीक है, वो थोड़ा उनके साथ familiar हो जाए, easy हो जाए, and he could trust the words of the angel. ठीक है, he could understand the words of the angel. So Behral, this happened with the 3 times. For the 3 times, the angel hugged him, squeezed him tightly, and finally he left him again. And after the third attempt of the angel Jibril, now he became very scared. He felt suffocated, and he now asked in his scared voice that what I'm supposed to read. Understood? So अब ये जो मैंने जितने pointers बोले हैं, do you literally think कि ये एक पेज में नहीं आ सकते? अब हमें 2 पेजेस तक तो लेंथ ले जानी है ना. ठीक है, 2 पेजेस तक तो करना है अपने कंटेंट को कवर. अब हम बताएंगे the verses that were revealed to him. As soon as he revealed with those verses, वो क्या verses थी? Student need to write down in the answer. वो क्या verses थी? After receiving those verses, he straight go to the home. After coming out of the cave, he heard the angel's voice. An angel called him by and said that you are the messenger of Allah. अब ये जो मैंने इतने सारे points बोले हैं, क्या ये 1.5 पेज की कहानी तो नहीं है ना? और ना रेवोल्यूशन का इंसिडेंट इतना छोटा है. फर्स्ट रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है हमारा पास्ट पेपर का. ठीक है, अब उसके बाद आप बताएंगे कि after coming to home, how Hazrat Khatija comforted him, what was the remark of the Khatija. Then last part इसका क्या होगा कि हजरत, यस, पूरा डिटेल में ही हमें बताना है till the words of the Warqa bin Nawfal कि उन्होंने कैसे श्योरिटी दी. He said that this is the same angel that had been coming to the Prophet Moses, और Prophet Moses के पास यही एंजल आते थे. You have been entrusted with this responsibility as the last messenger of the God. Although Warqa mentioned that if I remain alive, I am going to support your call. Or soon Warqa passed away. He was a blind man. He was a learned scholar of the time. ठीक है, he used to write the verses of the Bible, and the revelations eventually stopped after this. ठीक है, इसके बाद एक break आ गया, and the revelations were not continuous in for the few for the later few time period. Okay, understood? यहाँ तक नहीं, हमने बस यहाँ तक रखना है कि रेवोल्यूशंस जो है वो एक टाइम, इसके बाद रेवोल्यूशंस एक्चुअली suspend हो गई. ठीक है, because the prophet peace upon him was unable to bear the presence, so the revelation suspended till the second revelation. He became like very concerned and furious. ठीक है, so this is how आपने first revelation तक ही रहना, आप second पे jump नहीं करोगे. ठीक है, लेकिन बस यहाँ तक आके आपने आंसर को end कर देना. सही है? And he understood that he has been selected as the messenger of the God. Okay. अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट रेवोल्यूशन के बाद फॉर्म्स ऑफ द रेवोल्यूशन के क्वेश्चंस भी आप लोग देख लें, ताकि हम इंशाल्लाह हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान को आज कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है, राइट एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट वेज इन व्हिच द रेवोल्यूशंस केम टू द प्रॉफिट, इंक्लूड एग्जांपल्स इन योर आंसर. इंक्लूड एग्जांपल्स का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय द इंक्लूड एग्जांपल्स इन द आंसर? राइट एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट वेज इन व्हिच, यस, एक तो डिफरेंट वेज में हम 3 मेजर फॉर्म्स की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ सुरेश शोरा के इट इज नॉट befitting for a man to directly talk to the Allah subhanahu wa ta'ala, but there are 3 ways, through the inspiration, through the specifically between a veil, and
थ्रू द एंजल जिब्राइल। वो तीनों क्या स्टेप्स हैं वो हमें मेंशन करने। अच्छा, यहाँ पे मैं पोर्टल का लिंक जो है, इट इज बाय द पेज ऑफ द अल्नाफी एकेडमी, मैं यहाँ पे इसको शेयर कर देती हूँ। वेट अ मोमेंट, वेट अ मिनट। हमारे पास इसमें डेमो पीरियड है, ट्रायल्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन सर्च द एंटायर पोर्टल, student can even join the 3 sessions, 3 live sessions are free for them, ठीक है, जिसमें वो आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्यूरीज को, अंडरस्टैंड कर सकते हैं पोर्टल को, और जज कर सकते हैं दैट हाउ दे कैन लर्न द कंटेंट फ्रॉम द पोर्टल डायरेक्टली। ओके, इसको पेस्ट कर दिया लिंक को, ठीक है। सही है। सो इट ऑफर्स एक्चुअली अ वाइड रेंज ऑफ द कोर्सेज, आपने जो पिक करना है वो अप टू द स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यूजुअली बिफोर द पास्ट पेपर सेशन वो जरूर ज्वाइन कर रहे होते हैं, मैंने बहुत देखा है। और फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस ये है कि अच्छी हो जाती है बच्चों की, और उनको समझ आ जाता है कि वेयर डू दे स्टैंड, ठीक है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ द रिवोल्यूशन के पार्ट भी हम देख लेते हैं क्या आए हुए हैं। द अगेन मोर और लेस सिमिलर हमें दिख रहे हैं, दैट कुरान वाज रिवील्ड all at once. Why do you think this was important? Why do you think the revelation was sent to someone who could not read or write? Muslims around the world memorize, recite the Quran in Arabic, even if they do not understand. What was the significance of the Prophet, peace be upon him, being giving the revelation rather than in writing? ठीक है, तो ये part भी है। कंपाइलेशन ऑफ कुरान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान का। इसमें हमें जो मेन चीज है, एक तो ये कि कंपाइलेशन हमारे पास 4 स्टेजेस में हम समझ लें इसे, ठीक है। पहले तो हम ये समझ लें कि देयर इज अ स्टेज ऑफ द प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने क्या एफर्ट्स की, स्टेज ऑफ द अबू बकर, स्टेज ऑफ द उमर, स्टेज ऑफ द उस्मान, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, फ्रॉम द पास्ट ईयर क्वेश्चंस के तकरीबन सभी कुछ अब तक आया हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है यहाँ पे। So write about the ways in which the Quran was compiled after the Prophet death. The Quran has been preserved in writing over 1400 years. Given account of the way in which it was compiled in the written format. ठीक है, right? The preservation of the Quran in the form of the Musaf al-Hafsa held by Hafsa. फर्स्ट पार्ट की भी आप बात करेंगे, और जब प्रिजर्वेशन आ रहा है तो प्रिजर्वेशन का मतलब है वी नीड टू टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज एंड दैट इज द एज ऑफ द प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। हमने यहाँ पे बात यहीं से स्टार्ट करनी है एक्चुअली। अगर डायरेक्टली आ रहा है क्वेश्चन के राइट अबाउट द वेज इन विच अबू बकर, उमर एंड द उस्मान वर इन्वॉल्व, ठीक है, तो यस वो एजुकेशनल बैकग्राउंड के ही बारे में हम एक्सटेंड करेंगे अगर हजरत उमर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। राइट अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू कंपाइल द कुरान इनटू द बुक फॉर्म। अब वो क्या मेथड्स रहे, किसने क्या एफर्ट्स की, अगेन अबू बकर, उमर एंड उस्मान, सबके बारे में आएगा, ठीक है। अगेन उसके पार्ट भी है, मैं जरा पार्ट बी को जंप कर रही हूँ, मैं यूज ऑफ कुरान इन द लीगल थिंकिंग पर आ रही हूँ। अच्छा, राइट एन अकाउंट ऑफ द 4 सोर्सेज ऑफ द इस्लामिक लॉ। ये 4 मेजर सेक्शंस है, ठीक है, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान के यूज ऑफ कुरान इन द लीगल थिंकिंग, ठीक है। उसमें हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, या तो क्वेश्चन चारों को मिला के दे दिया जाएगा, ठीक है, कि अकाउंट हम कंप्लीट बनाएं 4 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ पे, दैट हाउ दे आर ऑल टुगेदर यूज्ड, ठीक है, जिसमें टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द कुरान, और कुरान किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है इजमा को, सुन्ना को, कयास को, ठीक है। We need to talk about them, ठीक है। The Quran is the main source of Islamic law. This is the second question on the screen. Write an account of how it is used with each of the other source, कैसे वो उसके साथ यूज किया जा रहा है। उसके बाद the Sunnah is often used with the Quran as a primary source. Describe the ways in which it is used together, ठीक है। तो write about the ways in which Quran and Sunnah is used together. Quran and Sunnah are the primary sources of law, ठीक है। अगर आप एक ही दफा अच्छी डिटेल याद कर लेते हो, क्योंकि ये एक कॉमन टॉपिक है फॉर द P1 एंड द P2, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है दैट इट इज वन ऑफ द कॉमन टॉपिक फॉर बोथ द P1 एंड द P2। अगर आप एक ही दफा अच्छा याद कर लेते हैं तो आज कुरान एंड सुन्ना का रिलेशनशिप भी हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। वी कैन पुट एग्जांपल्स मोर और लेस सेम इन द P1 एंड द P2, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इजमा एंड कयास हमारे पास P1 में थोड़ा हमें कम देखने को मिला है, लेकिन P2 में इजमा एंड कयास ज्यादा आया है, ठीक है, बिकॉज दीज आर दी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ द लॉ। और उसका जो काम है एक्चुअली वो फंक्शन करना है आफ्टर दी मे बी डेथ ऑफ द प्रॉफिट, पीस अपॉन हिम, फॉर द मॉडर्न इश्यूज, फॉर द इश्यूज दैट वर नेवर रेज्ड अर्लियर, ठीक है। तो उन तमाम क्वेश्चंस के लिए वी हैव टू पिक द आंसर फ्रॉम द इजमा एंड द कयास।
इजमा का मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ. ओके, आई फॉरगॉट टू कॉपी दैट क्वेश्चन हियर. इजमा का एक क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक दैट P2 में दिया गया है, P1 में नहीं, P2 में, एज आई सेड. ठीक है, वो क्वेश्चन क्या आया है, वो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, डिफाइन दी अबाउट द इजमा. पहली चीज उसकी डेफिनेशन, फिर उन्होंने उसमें पूछा है पॉइंट बना के, ठीक है, दैट हु कैन प्रैक्टिस द इजमा, यानी कि हु इज एलिजिबल टू डू द इजमा. देन व्हाट आर द एग्जांपल्स और द टाइप्स ऑफ द इजमा. ठीक है, तीनों पॉइंटर्स उन्होंने अपने क्वेश्चंस में डाले. तो इजमा की पहले तो एक बेसिक डेफिनेशन है जो कि स्टूडेंट्स को डालनी होती है. ठीक है, इजमा की बतानी होती है प्रेरिक्विजिट्स ऑफ द इजमा, या इजमा कर कौन सकता है. ठीक है, जो इजमा करेगा, दैट द स्कॉलर हिमसेल्फ, ही शुड बी वेल वर्स्ड इन द कुरान एंड द सुन्ना. वो इजमा करे कैसे, ठीक है, इजमा करने का क्या तरीका होगा. ही नीड टू कलेक्ट द ओपिनियंस, बिकॉज विदाउट ओपिनियंस, विदाउट द कलेक्शन ऑफ द ओपिनियंस, द इजमा इज फेल. ठीक है, क्योंकि ये तो कुरान की स्टेटमेंट है, दैट कंसल्ट देम इन द अफेयर्स. तो इसका मतलब है कि कंसल्टेशन वाज द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, एंड दैट सेम प्रैक्टिस अप्लाइज फॉर द उम्मा ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. ठीक है, उसमें बहरहाल वो कुछ की एलिमेंट्स है जो हमें लिखने होंगे कि इजमा की डेफिनेशन के बाद कि इजमा किस तरीके से किया जाएगा. फिर इजमा की टाइप्स में एक तो हम ये देखेंगे कि इजमा was done in the age of companions, इजमा done by the scholars of the time, इजमा of the common people. और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक आपका परमानेंट नेचर इजमा होता है और एक आपका टेम्पररी नेचर इजमा होता है. तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द की एलिमेंट्स इन द आंसर. ठीक है, और फिर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी होगी एग्जाम्पल्स टू बी एडेड. अगर क्वेश्चन कयास का आता है तो हम इसी तरह कयास में भी उसकी डेफिनेशन बताएंगे. एलिजिबिलिटी, द वन हु कैन परफॉर्म द कयास, कयास कर कौन सकता है, ये दूसरा नंबर का पॉइंट हमारा होता है आंसर में. उसके बाद हम बताते हैं एलिमेंट्स ऑफ द कयास, क्योंकि कयास में असल इज द बेस. ठीक है, उसमें हुक्म क्या आ रहा है, प्रोहिबिशन है, क्या पॉइंटर उठाया गया है. ठीक है, फिर उसकी जो इल्ला है, ठीक है, वो क्या है. ठीक है, यानी कि उसका कॉज क्या है. यस, हम ये देखेंगे कि कयास इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द लॉ, ऑन द लॉज. एक उसका फॉर्मूला है कयास को करने का, वो फॉर्मूला हमें याद रहे, असल इल्ला हुकुम. ठीक है, ये तमाम तर हमें पॉइंटर्स अगर याद रहेंगे तो कयास बिकम सो इजी टू अंडरस्टैंड. कयास हमारे लिए आसान हो जाता है करना. सही है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू द कयास. ठीक है, उसके बाद कयास की क्या एग्जाम्पल हो सकती है, बट एग्जाम्पल हमें जो हम जो भी पिक कर रहे हो, वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि इजमा की एग्जाम्पल्स बिल्कुल अलग होंगी, कयास की बिल्कुल अलग होगी. कयास की एग्जाम्पल करते हुए हम असल हुक्म, अला एंड फर्क को दिमाग में रखेंगे, और इजमा की एग्जाम्पल्स करते हुए हम ये बता सकते हैं कि कंपेनियंस की एज में अबू बकर के दौर में इजमा, उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इजमा, हजरत उस्मान के दौर में इजमा, इवन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड द एग्जाम्पल ऑफ द कोविड इज देयर. ठीक है, सो ये वो बहरहाल इजमा की एग्जाम्पल्स हैं. सही है, तो आई होप के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये एक सेक्शन. अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ कुरान इन द थॉट्स एंड एक्शन से एक्चुअली कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं इन द 10 मार्क्स, जबकि पार्ट बी के लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पार्ट बी के लिए हमें समझना चाहिए कि सिग्निफिकेंस क्या है कुरान की हमारी जिंदगी में, इन थॉट्स एंड द एक्शंस में. अंडरस्टूड. ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड अ वेरी डिटेल पार्ट फॉर द फर्स्ट सेक्शन, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान और थीम बेस्ड क्वेश्चंस को आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी किया है. So I hope you guys have enjoyed the lecture of the day. ठीक है, for more queries and to be aware with the अपडेट विद द लेक्चर. ठीक है, कि किस तरीके से हम डिलीवर कर रहे हैं और क्या यहाँ पे कंटेंट बताया जा रहा है. सो प्लीज स्टे इवन कनेक्टेड विद द पोर्टल एंड विद द टीचर एज वेल. ठीक है, सो दैट यू कैन बी वेल अवेयर. और इसको आई बिलीव आप लोग अगर क्योंकि ये ब्रॉडकास्टेड सेशन है, ठीक है, तो यकीन यूट्यूब पे भी है आपके पास, डिफरेंट चैनल्स पर है, वेयर यू कैन गो एंड log in and directly see the lecture by yourself. Okay, so jazakumullah khairan kaseera for attending the lecture of the date. For further queries, please do connect with the portal. I will update inshallah कि ये हमारे पास next live class हम inshallah कब रखेंगे. और अपडेट लाइव क्लास इसलिए भी जरूरी है ताकि जो और स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, they can come and they can join and they can particularly understand other important like important part. अगर उनसे एंड मोड पे कोई पार्ट मिस हो जाते हैं तो वो इंशाल्लाह सेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और क्यूरीज भी कर सकते हैं. ठीक है, so thank you so much for attending the session of the date and see you soon inshallah for the next upcoming session. Please stay connected with the portal and with the teachers so that you can remain alert about all the programs of an update. Jazakumullah khairan kaseera.